Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the atomic structure. So in the last class we were talking about Rydberg equation. हमने Rydberg equation के बारे में बात की थी. So if you have not seen the previous lecture, I will add the link in the description. आप वहां से जाके देख सकते हैं. Today we will talk about limitations of Bohr's model. आज हम बात करेंगे बोर्स मॉडल के साथ जो एसोसिएटेड लिमिटेशंस थी उनके बारे में. सो ऑल्दो बोर मॉडल वाज अ वेरी सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल, बोर मॉडल जो था वो एक बहुत सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल था, बट कुछ लिमिटेशंस उसके साथ भी एसोसिएटेड थी. तो लेट अस सी दैट. सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट Bohr's model could not explain the atomic spectra of multi-electron atoms. ऐसे एटम्स जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, ऐसे एटम्स जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, उन एटम्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. सो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन. Now the second limitation. When a high resolving power spectroscope was used to analyze the spectral lines present in hydrogen spectrum, it was found that a spectral line is not a simple line, but it consists of several fine lines which are very close to each other. जब आप कह सकते हैं एक पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज किया गया, एक पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज किया गया टू एनालाइज द स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेजेंट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट वाज फाउंड दैट एक स्पेक्ट्रल लाइन जो थी वो एक सिंपल लाइन नहीं थी, बट इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल फाइन लाइंस. इट कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट? सेवरल फाइन लाइंस which are very close to each other. So Bohr model could not explain that also. So this is the second limitation regarding Bohr model. Now the third limitation, Bohr model could not explain the splitting of spectral lines under the influence of magnetic field and electric field. The splitting of spectral lines under the influence of magnetic field is known as Zeeman effect. क्या बोला जाता है? Zeeman effect. And the splitting of spectral lines under the influence of electric field is known as what? Stark effect. So Bohr model could not explain Zeeman effect and Stark effect. बोर मॉडल इन दोनों इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. सो दिस वाज द थर्ड लिमिटेशन. नाउ द फोर्थ लिमिटेशन, देयर वाज नो प्रॉपर जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड regarding the statement which was proposed by Bohr's theory that angular momentum of an electron is integral multiple of h by 2 pi. सो ये जो स्टेटमेंट बोर थ्योरी ने प्रोवाइड किया था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया गया. नाउ द फिफ्थ लिमिटेशन इज दैट Bohr's model is not in agreement with Heisenberg's uncertainty principle. डोंट वरी, हम बात करेंगे रिगार्डिंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो जो बोर मॉडल था, इट वाज नॉट इन एग्रीमेंट विथ व्हाट? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ एग्री नहीं कर पा रहा था. सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस associated with Bohr model of atom. Because of these limitations,
Bohr model of atom was discarded and we have adopted a more recent quantum mechanical model of atom. So before talking about quantum mechanical model of atom, there were some very important developments which led to the formulation of quantum mechanical model of atom. और वो developments क्या थे? They were dual behavior of matter and Heisenberg's uncertainty principle. So before talking about quantum mechanical model of atom, we have to talk about dual behavior of matter and Heisenberg's uncertainty principle. So today we will keep it till here only. We'll continue to talk about these important developments, that is dual behavior of matter and Heisenberg's uncertainty principle, before proceeding to quantum mechanical model of atom in the next class. So thank you so much.